एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट बज। तो आज मैं फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शेयर करूँगी, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, बट मैंने कुछ बढ़ा भी दिया है बिकॉज पता ही है कि 12 के सिलेबस कितने बड़े हैं, जिसमें वो टोटल 10 यूनिट्स है 15 चैप्टर्स के। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस हैं क्लास 12 के वो आज हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ओके, तो जो भी मैं इसमें बताऊंगी उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि यही आए, बट एज़ पर माई रिसर्च ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके अपकमिंग 2024 एग्जाम में। सो जस्ट पे अ लुक केयरफुली। सो हमारा जो सबसे पहला डेरिवेशन है वो होगा कूलम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। आपको ये डेराइव करना पड़ेगा। ट्रस्ट में डेरिवेशन हार्ड तो दिखता है बट ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ओके, प्रैक्टिस दीज डेरिवेशन 3 से 4 बार अगर आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करते हो आपको 100% ये याद हो जाएंगे। ये कोई हार्ड नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने अपना 12 दिया था दिस क्वेश्चन वॉज देयर। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज डेरिवेशंस आर कि अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको पुट कर दोगे ईच क्वेश्चन में। यू कैन जस्ट पुट दीज फॉर्मूलाज एंड यू विल गेट योर मार्क्स इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग योर आंसर. So second derivation is application of Gauss's theorem in the calculation of electric field. ये जब मैंने 12 दिया था तो ये आया था और मैंने काफ़ी पहले दिया था, तो so it can repeat. The capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric medium. The next one is electric potential due to a point charge. Look, derivations ना base होते हैं. Why are you doing वॉट यू आर डूइंग, लाइक आप जो सॉल्व करोगे वो क्यों सॉल्व कर रहे हो, आप वो पुट कर पाओ ईजीली। आपके जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, ये काफ़ी ईजी बनाता है। सो इफ़ यू नो द डेरिवेशन यू कैन एटलीस्ट पुट दोज डेरिवेशन फॉर्मूलाज व्हेन यू गेट योर क्वेश्चन, सो इट इज़ वेरी गुड थिंग. Also, with reference to your first unit, I'll tell you that please learn some theory questions about Coulomb's law, Gauss's theorem, capacitance, so that at least when you start solving your question, you can write something at first and then start your derivation. It will also increase the length of your answer, which is good thing, and then later you can start doing your derivations. So let's start with the second one. So the next unit of derivation is current electricity. So the first derivation which is important in your unit 2 is application of Gauss's theorem. Again I'm telling, learn something, the theory part about Gauss's theorem, and then learn your derivation too. So application of Gauss's theorem in the calculation of electric field intensity due to thin infinite plane sheet of charge, uniformly charged spherical sphere. The second important is series and parallel connection of resistors. These two are important in unit 2, but this doesn't mean that you're not going to learn the other derivations. I have just taken an estimate what can be important, so you can go with this, but do learn each and everything. I'm repeating. Now first and third unit is a little bit contains more of derivation. So the first derivation is torque experienced by current loop in a uniform magnetic field. Ampere's law and its application is very important. Now unit 3 has more derivations like Biot-Savart law. You have to derive its expression for magnetic field, cyclotrons, torque force between two parallel current. Coming to the next, which is electromagnetic induction and AC, which is unit 4. Here you have to do the derivation of EMF induced in a rod moving in a uniform magnetic field. Impedance rectangle, mark it as important. I hope that you do hold a pen and a paper. And average power in series LCR, LR, LC or CR circuit. Circuits do come in your exam. So I'll also tell that mark these rectangle one, very, very important. So the last one, which is unit 5. This is not last in this video. I have done, right now I have only done 5 units. Later I'll bring more 5 units important derivations. So the last one I was telling is derivation of displacement current. So this chapter, this unit has only one. So why to leave it? Just complete with it. Hope this video helps. Do practice all those I told, but do not left other also if you're having time. Hope this video helps. Thanks for watching. Bye bye.